Hello, Akash. Okay, your life. Hi, Akash. Hi, Bong. UD. Can you hear my voice clearly? एक बार बता दो अगर साउंड प्रॉपर आ रहा है तो. मेरा आवाज कमी कर. Hello, Mr. Underdog. Yes, voice and video are clear. Thank you. Thank you for updating. Guys, I'm going to talk about my experience building a PlayStation game today. और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं दैट आई वांट टू शेयर जो यूजुअली वी डोंट रियली नो अबाउट व्हेन वी ट्राई टू मेक अ गेम बट पिछले कुछ महीनों में द अमाउंट ऑफ नॉलेज द अमाउंट ऑफ crazy inputs that we have got while building a PlayStation game is crazy. Or the whole point of doing this is to share those things with you so that दो चार चीज़ें तुमको पता चले क्योंकि I see a lot of young kids making big PC and console games. I mean, claiming to make big PC and console games. But game banana on PC is completely different from making a game for consoles. It's absolutely
crazy task. Sir, I am a teenager studying class 11 commerce. Wanna be a game designer in future. What steps I should take in future? Future में you don't have to take steps in future. You have to do that now. Class 11 is good enough to start working on things that will help you build a career in game design. Um, Things like learning stuff which usually is required to become a good game designer. Things like what are the important things that you need to become a game designer. Things like you should be able to visualize things. You should be able to write um, write what you're thinking. You should be able to communicate it very well. Then there is a lot of design element, the basic lingos and terminologies of game design that usually are used in the industry. ये सब चीज़ें सीखने के लिए तेरे पास बहुत साल है. You have a lot of time with you, a lot of years that you can actually start working on if you want to become a game designer. But that's the start. Along with that, you need to also start building a good portfolio. How do you make a good game design portfolio? I have created a lot of videos जिसमें मैंने ये चीज़ क्लियरली बताई हुई है. How do you actually build a good portfolio for game design, for game art, for game programming, everything. So take a look at that, because um, every domain has a different set of requirement, and if you try to fit in, if you want to build your portfolio specific to one particular domain, there are 10 different things that you need to do. आर्टिस्ट के लिए कुछ अलग चीज़ करनी पड़ती है, डिज़ाइनर के लिए कुछ अलग चीज़ करनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग के लिए अलग करनी पड़ती है. सो मेक श्योर यू वॉच हाउ डू यू डू दैट फॉर गेम डिज़ाइन. वंस यू आर क्लियर अबाउट दैट, आई थिंक then you can start building a portfolio for a game design profile, because game design में you need to think about things that you, because artists के लिए it's easier because they can make those 3D elements and create a nice kick-ass ArtStation portfolio और Behance portfolio जिसमें विजुअली दिख रहा है उसका टैलेंट क्या है. बट फॉर गेम डिज़ाइनर इट्स ए चैलेंजिंग. इवन फॉर प्रोग्रामर इट इज़ ईजियर, बिकॉज प्रोग्रामिंग में यू कैन एक्चुअली पुट डेमोज एंड प्लेबल्स जो पीपल कैन प्ले एंड दे कैन see your work. But when it comes to game design, there's a complete different set of things that you need to do. So make sure you watch those videos. Just to give you a gist, you just need to create a few concepts which are your own concepts. Write it down really well. Create mocks for explaining those concepts. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर करके you can build a good portfolio. 11 से लेके probably for the next 4-5 years you can actually build a good portfolio. Hello Ansh Sharma. What is up guys? What is up on Friday night? Okay, quickly to start with, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. मतलब जो टॉपिक की मैं आज बात कर रहा हूँ इस लाइव स्ट्रीम में, एंड I'll try to do
topic based live streams from now on. बट अभी जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ वेर इन वी हैव अ complete different experience now building a game for PlayStation. Our game is primarily for PlayStation 5 and PC both. But अगर आप बहुत अच्छे विजुअल्स के साथ कोई गेम बनाना चाहते हो तो उसका आउटपुट यू कैन get a good output on PC with high end graphics card and all those things, but optimizing the same thing for consoles is a monstrous task, and the complete pipeline works in a different way. Like, is any new game you are working on? Yes, new game is not a new game, but a game that we've been working for years now. The game is called Mukti. If you can check the trailer out, you can see what kind of game are we making. Recently, in the sense, in January or February, we won the Sony India Hero project, जहाँ पे Sony now is taking care of the whole game, helping us build that game. So that's something that we are working on, Akash. अंश सर, गेम डेवलपमेंट सीखना कहाँ से के बारे में बेसिक्स नॉलेज कहाँ से सीखना शुरू करें? If you're talking about game development specifically, game development in the sense coding or programming, because game development in general is a big topic. उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और प्रोग्रामिंग की भी अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग चीज़ें आती हैं. You also it's like it depends on the tool that you use. So for now I can just tell you that if you are starting new, अगर तुम पहली बार गेम बनाने की कोशिश कर रहे हो or you are trying to get into the industry, it is recommended that you try starting with Unity, because Unity is way more easier than Unreal. सबसे पहली बात. दूसरी बात, Unity में you can build quick prototypes and test it out really well, really fast on, say, mobile also, because कैरेक्टर, प्री डिफाइंड कैरेक्टर लेके एक फॉरेस्ट वाले एनवायरनमेंट में या सिटी वाले एनवायरनमेंट में डाल के उसको चलाना, दैट्स नॉट अ गेम. A lot of young kids are doing that and they are calling it Indian GTAs or probably games like open world games, but that's not how it works. So if you want to start game development, basic se, just start with Unity and start with C Sharp. Also take a small concept, like a concept that you can finish. तो एक कोई भी मान ले बबल शूटर जैसा गेम हो, उसको बनाने की कोशिश कर फ्रॉम स्क्रैच टू एंड. सी देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ वीडियो tutorials available now on the internet. Just go and check out those, use that data information, use it in your game, try tweaking those parameters अपने तरफ से जितना हो सकता है उसको improve करने की कोशिश करके take that game from day one to publishing it. That is the only thing that you need to focus on. सीखने की सेल्फ लर्निंग जितना करोगे उतना अपने आप के लिए बेटर है. और ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस भी है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं है कहीं भी कुछ भी,
है ऐसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स भी, बट आई डोंट नो, आई डोंट रियली रिकमेंड एनी कॉलेज और एनी इंस्टीट्यूट लाइक दैट. तो मुझे नहीं पता, आई कांट एक्चुअली रिकमेंड. बट सेल्फ लर्निंग जितना करोगे उतना बेटर है. And one of the most important thing is internships. Internships are magic. Try getting internships, because internships से आपको definitely बहुत कुछ सीखने मिलता है. सर मुक्ति अनरियल इंजन 5 में बन रहा है क्या? जी. अंश, वी आर बिल्डिंग मुक्ति on Unreal 5.3, which is a stable and a latest version today. Unreal Engine 5.3 पे बन रहा है, एंड हो सकता है ये भी सिचुएशन हो सकती है that we'd probably switch it to a higher version whenever the time comes. But right now it's 5.3. Can I become a game developer without programming background but by using visual scripting? Ansh Sharma, the answer to your question is yes. You can become a programmer. You can become a programmer, a game developer without having a programming background, but you would be like an average game developer, not a good or great game developer. And not saying that log कर नहीं रहे. There are a lot of game developers who are only doing visual scripting and doing good also. बट एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा. इट्स लाइक यू if you if you have to drive a car, might as well try learning a manual gear shifting car. क्योंकि अगर ऑटोमेटिक पे सीखोगे तो जिस दिन हाथ में मैनुअल गाड़ी आएगी जहाँ पे गियर डालने पड़ेंगे, उस दिन वो गियर समझ नहीं आएंगे. उस दिन क्या करना है, बिकॉज हमें आदत ऑटोमेटिक गियर्स की है. सो दैट्स अ काइंड ऑफ सिमिलर थिंग. सो जितना कोर प्रोग्रामिंग सीखोगे उतना बेटर है. एंड सीखना ये एज में या किसी भी एज में, आई थिंक इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट इफ यू पुट इन योर हार्ट. What are the best books and resources on game designing? मेरा I would tell you, I don't remember the names of the books now. But मेरे चैनल पे जाके 3 साल पहले के कोई भी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, 5 गेम डिजाइनिंग के बेस्ट बुक्स मैंने डाले हुए हैं. Check those books. I already watch. It's very good, sir. I eager waiting for play. Good. Also, whatever you've seen, अभी तक जितना भी you have seen of Mukti, be it the cinematic trailer या फिर कोई gameplay का piece, it is nowhere compared to what we are building today. The quality is like 10 times bigger than what you're seeing currently on internet. We are not doing any unnecessary promotions or marketing for the game, and we'll not do that till the time comes, because we are keeping it very low key. जब ही वक्त आएगा तभी बहुत बड़े लेवल की डिटेल्स बाहर आएंगी. बिकॉज जो विजुअल्स आज तुम्हें दिख रहे हैं वो इट्स लाइक 10% ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टुडे. एंड it will be good if that comes like a big surprise for everybody whenever it comes. So best is to wait. SK Game Dev, hi. Rahul, so I was planned to study Germany for international job in future, but for some reasons now I'm in Hyderabad. It's my second year of BTech. What will be the steps for me to get an international job? International job in which field? Question number 1. Because you're doing BTech and
I don't know what your plan is, whether you want to go in software or in gaming, because these are two different, completely different things. So yeah, the the more clear you are, the more like the better I can answer. Um, but sad to hear that you couldn't do this Germany thing. Um, but yeah, by the way, there's Gamescom happening in Germany next month, August 21st से लेके 25th तक, 24th या 25th तक. And yours truly is going to Germany for Gamescom. तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे. Shriman YouTuber, hi sir, how are you? I'm good, Shriman, how are you? सर एंडलेस रनर जॉनरा कैसा रहेगा बिगिनिंग लेवल पर? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. एंड आई एम नॉट किडिंग. हमारा जो पहला सक्सेसफुल गेम था वो एक एंडलेस रनर ही था. एंडलेस रनर में एक चीज़ काफ़ी अच्छे से तुझे सीखने मिलेगी, एंड दैट इज़ हाउ डू यू प्रोसीजरली जनरेट मैप्स. बिकॉज एंडलेस रनर को एंडलेस बोलते ही इसलिए बिकॉज यू कांट बिल्ड लेवल्स which has like a finishing point to it or a limited area. The tracks, अभी endless runner की अगर मैं बात करूँ तो just to take an example, Subway Surfer is one of the big example. Subway Surfer में भी जो ट्रैक आ रहा है it's an endless procedurally जनरेटेड ट्रैक. तो वो किस तरीके से करते हैं वो तुझे बहुत अच्छे से सीखने मिलेगा. जस्ट टू गिव यू जस्ट बेसिकली वो लोग पर्टिकुलर एरियाज बनाते हैं एंड देन उसको सिंकअप करके रैंडमली कॉल करते हैं, विच इज़ व्हाट वी आल्सो डिड ड्यूरिंग स्केटलैंडर डेज. But yeah, it's a good starting point for you as an endless for the endless runner. How can I get in touch with you if I need clarification about something, sir? This is how you get in touch. मेरे लाइव स्ट्रीम पे आके क्लैरिफिकेशन मुझे अभी पूछ ले, मैं अभी बताऊंगा. मैं लाइव कर ही इसलिए रहा हूँ so that I can clear the doubts. Hello sir, Daddy Docs. Hello sir, please suggest some mobile game for to play. Unfortunately, बहुत वक्त हो चुका है मुझे कि मैं मोबाइल गेम्स खेला हूँ. Today, like now, I'm addicted, kind of addicted to because खेलने भी पड़ते हैं, because you learn also a lot of things. But I'm more into PlayStation 5 now. So everything that I'm doing is just revolves around PlayStation and PC games. So unfortunately mobile में मुझे अभी पता नहीं है लेटेस्ट क्या चल रहा है. Genuinely. सर मैं अनरियल इंजन में बना रहा हूँ एक एंडलेस रनर गेम. अमेजिंग. अभी इसमें एक प्रॉब्लम है अंश. आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर बिल्डिंग एन एंडलेस रनर फॉर मोबाइल, और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ बता दे. बट अगर तू पीसी के लिए बना रहा है या इच के लिए बना रहा है, वेब ब्राउज़र के लिए बना रहा है, वेल एंड गुड. बट इफ़ यू आर मेकिंग दिस endless runner game for mobile on Unreal, then it's a big mistake. I mean, I'm not saying Unreal is not capable of. It's just that given the experience that probably you have, it would be a heavy task for you to optimize that game for mobile, which is built on Unreal. Whereas if you make a game in Unity, it's well optimized for mobile.
अभी तो पीसी के लिए कर रहा हूँ. गुड. देन इट्स सॉर्टेड. वाइल्ड बीस्ट, नमस्ते. नमस्ते भैया. Did diploma in CSE, so now I have only option BTech. I thought the game dev thing didn't need a proper degree, so I thought BTech will help me in data collection and mainly AI learning as a. Then it's absolutely perfect. There's no game. Yeah, game dev, gaming does not require a degree for sure. But here's the tricky part for you specifically. एंड द ट्रिकी पार्ट इज कि तू चाहता है इंटरनेशनल जॉब. वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, इंपॉर्टेंट कॉल.
Okay, thank you for your patience, guys. Mother's call is important. दुनिया में कोई भी चीज़ कर रहे हो छोड़ दो और अपनी माँ का फ़ोन उठा लो. उससे ना उठाने की गलती मत करना. बहुत ही खतरनाक उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सो इसके लिए मैंने उठाया फ़ोन. ओके, कंटिन्यूइंग ऑन द टॉपिक गाइस. species. Okay, ठीक है. Yeah, the the question that Rahul Jetwani has asked. The problem is, the problem is, जो तूने इंटरनेशनल जॉब की बात की है ना, इंडिया से इतना इजी नहीं है. इंडिया से बिल्कुल इतना इजी नहीं है टू गेट एन इंटरनेशनल जॉब डायरेक्टली. फॉर all the industry professionals today also who are working in India, उनको 3-4 साल काम करना पड़ता है to learn a lot of things so that you can actually approach international companies for a job. इतना because there is a big difference. There's a big difference in the fresher that is selected in an international company versus a fresher in India. उस फ्रेशर को बहुत चीज़ें आती है, स्क्रिप्टिंग से लेके गेम डिज़ाइन से लेके बहुत कुछ चीज़ें, शेडर प्रोग्रामिंग तक बंदे क्रैक कर चुके हैं वहाँ पे. वेरएज़ यहाँ पे जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, हाउ डू वी स्टार्ट, राइट? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है. सो फॉर्मल एजुकेशन ना होने के कारण लॉट ऑफ पीपल डोंट नो द बेसिक्स ऑफ इट. अब ये फ्रेश लेवल नॉलेज लेके अगर तू वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो नहीं हो पाएगा. द ओनली सोल्यूशन दैट यू हैव इज when you are done with your BTech, try getting a job into a really good company in India, probably a bigger company in India. Like two things. One is either try in a bigger company which has tie-ups outside, then it's easier to network that ways. Second is work probably in a smaller company, learn a lot within that company and then apply outside. अदरवाइज एक मीडियोकर कंपनी में अगर तू जॉब करने जाएगा इंडिया में, जैसे मान ले तुझे बनाना है रेड डेड रिडेम्पशन, लेकिन तू काम कर रहा है किसी रियल मनी गेमिंग कंपनी के लिए इंडिया में, तो भूल जा. तो तेरा फ्यूचर यही है, यहीं पे. वर्सेस if you can get a job in something like Sumo Digital या Ubisoft या Rockstars या Underdogs. It's a shameless plug but I have to do it. तो तू इंटरनेशनली बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता है, because then you learn a lot how to make a PC or a console game. सर आप कैसे टीम मैनेज करते हो? Years of experience पहली तो बात, and you need to use a lot of tools. इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो आप सिस्टमैटिकली काम को कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. हर चीज़ टूल्स से होती है. आप पूरे टीम को स्लैक पे एक साथ ला रहे हो, वहाँ पे बातें कर रहे हो, पूरे टीम को कौन क्या कर रहा है आपको पता है. आप ट्रेलो यूज़ कर रहे हो सबके टास्क देखने के लिए, आप मीरो यूज़ कर रहे हो पूरे प्रोजेक्ट का पाइपलाइन देखने के लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूल्स से सॉल्व होती हैं. और दूसरा पार्ट है कि आप पीपल मैनेजमेंट कितने अच्छे से कर रहे हो, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपने लोगों को किस तरीके से एज ए टीम रखा हुआ है, क्या रैपो बना के रखा हुआ है.
होती है ऊंची नीची चीज़ें, होती रहती है ये चीज़ों में, बट एट द एंड ऑफ द डे द मोर यू डू इट उतना एक्सपीरियंस आएगा, उतना सीखोगे, उतना बेटर कर पाओगे। मैं एक गेम बना रहा हूँ जो हैवीली स्टोरी बेस्ड, एंड काफ़ी समय मैंने स्टोरी राइटिंग सीखी है, 3 इयर्स, और थोड़ा जेल्डा स्टाइल रखना है। गुड, लाइक इट। बर्नआउट हो गया सर यूनिटी डेव करते करते। कृष्णानंद यादव, व्हाट इज योर एज ब्रो? हाउ, व्हाट इज योर एज? किस एज में तू बर्नआउट हुआ है? किस एज में एग्जैक्टली बर्नआउट हुआ है? मुझे क्यूरियोसिटी है अब इस बात की। I don't know. I never feel. I have never felt burnout, burned out till now. I don't know what you're talking about. Because ये सब चीज़ें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। गेम का स्टाइल लो पॉली चीपी, लाइक ब्रिलियंट डायमंड एनिमल क्रॉसिंग। ओ जैसा रखना है, लाइक इट, कॉन्सेप्ट वाइज एटलीस्ट। आशीष के इज इट मी और नॉट ऑडिबल? वो मैं बोला अम्मी जान का फोन था तो मैंने ऑफ किया था। इंपॉर्टेंट कॉल मॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, यस सर। प्लीज कम ऑन डिस्कॉर्ड, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माय मोबाइल गेम स्टार्टअप। यहाँ पे पूछ भाई, शर्मा क्यों रहा है? तो यहाँ पे पूछ। Hello, bye. How are you, Game Rider? I'm good. How are you, guys? लाइक बटन पे क्लिक कर दो एक बार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एल्गोरिदम को थोड़ा बता दो कि हम अब लाइव करेंगे थोड़े फ्रीक्वेंटली। सर बिगिनर भी आते हैं आईजीडीसी में? यस, 100%, 100%। एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी जो गेम इंडस्ट्री में है या जो गेम इंडस्ट्री में आना चाहता है, दे हैव टू अटेंड आईजीडीसी। ये मेरी बात अपने जहन में डाल लो। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट यू शुड नेवर एवर मिस इट। इमेजिन करो, इंडिया में 600-700 गेम डेवलपमेंट कंपनीज है, उसमें से 50 अच्छी कंपनीज, बड़ी कंपनीज है। आईजीडीसी में 5000 लोग एक साथ एक कॉन्फ्रेंस में आते हैं, और ये 5000 लोग इन्हीं 600 कंपनीज के कोई एम्प्लॉयज है, कोई फाउंडर्स है, कोई टेक लीड्स है, कोई आर्टिस्ट है। कहाँ मिलेगा तुम्हें ये मौका टू स्पेंड दीज 3 days अंडर वन रूफ, मीटिंग दीज पीपल, लर्निंग फ्रॉम देम, अटेंडिंग टॉक्स, अटेंडिंग पैनल्स, नेटवर्किंग विद देम, आस्किंग योर क्वेश्चंस, गेटिंग देम सॉल्व। क्या चाहिए तुम्हें और? आई डोंट गेट इट ब्रो। सर मोबाइल गेम पब्लिशर डील में गेम की आईपी क्या शेयर रहता है बिटवीन पब्लिशर एंड डेवलपर, या सर पब्लिशर के पास ही रहता? आईपी जो तू डील करता है, जो भी परसेंट का डील जो तू करता है, वही होता है तेरा आईपी परसेंटेज। लाइक अगर तू 50-50% डील करता है पब्लिशर के साथ, तो both of you have 50% rights on the IP. Simple. 120% of Batman Arkham Knight done. 120%? नहीं, पार्ट 2 भी खेल लिया क्या तूने उसी के अंदर?
I'm good, bhai. Okay. So I want to create an endless runner using voxel as the art style. Should I proceed with this plan? ये मेरा प्लान था 2015 में. Skatelander. This was my plan, and I executed it really well. एक बार स्केटलैंडर जाके सर्च कर गूगल पे, तुझे बहुत अच्छे रेफरेंसेस मिलेंगे. इट्स अ गुड आइडिया, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि आज की डेट में वो चलेगा कि नहीं, बिकॉज वॉक्सल गेम 9 साल 10 साल पहले चल रहा था. Aki plays, hey Vaibhav, what's up, bro? I am good, bro. How are you, bro? Must go to IGDC. Hotel has best chicken curry. Must go. uh, मुझे तूने याद दिला दी उस खाने की. मैं क्या करूँ अभी. IGDC is like a second home. It's like Mecca. It's like IGDC के वो 4 दिन जो हम लोग वहाँ पे स्पेंड करते हैं, it's crazy. It's just love. Everybody should come to IGDC. Have you heard about news regarding Microsoft Windows outage error issue happened today? Yes. इसीलिए हम लोगों ने Slack वैक बंद कर दिया immediately. Microsoft Windows outrage. I know. सर मोबाइल पब्लिशर को फाइंड या पिच करने के लिए कोई टिप्स बता दीजिए. पहले के ज़माने एक चीज़ बताता हूँ. 8 10 8 6 7 8 9 10 साल पहले 8 10 साल पहले हमें कोल्ड मेलिंग करनी पड़ती थी. सो डेवलपर्स कम्युनिटी छोटी थी इंडिया में. सो हम लोग सारे लोग एक एक्सेल शीट में सारे पब्लिशर्स के नाम डाला करते थे, एंड देन एवरीबडी यूज्ड टू रीच आउट एवरीबडी. और सिर्फ इंटरनेट से पता चलता था कि हाँ ये एक पब्लिशर है जो शायद गेम पब्लिश कर सकता है. एंड तब इंडिया का इतना प्रेजेंस नहीं था. मतलब था, बड़े लोग तो बहुत पहले से जा रहे हैं, 20 साल से जा रहे हैं बड़े इवेंट्स में. पर हम जैसे लोग जो छोटे थे, हमें पता ही नहीं था कि कोई इवेंट भी होता है, कोई कॉन्फ्रेंस भी होता है जिसमें पब्लिशर्स आते हैं जिनको पिच करना पड़ता है. बट देन स्लोली नास्कॉम ने एक्चुअली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर किया हमारे लिए. नास्कॉम IGDC मैनेज कर रहा था उस टाइम पे. वी यूज्ड टू कॉल इट NGDC वो टाइम पे. तो नास्कॉम ने हम लोगों को कैजुअल कनेक्ट अमेरिका लेकर गए थे, विच वॉज ओ माई गॉड अमेजिंग. हम लोग वहाँ पे जिंगा भी घूमे थे. बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट एंड गेट टू योर पॉइंट इज, आज के डेट में इफ यू जस्ट मैनेज to figure out some budget for you to go to an event outside India, that's where you are sorted. इतने सारे पब्लिशर्स आते हैं वहाँ पे कि तुम वहीं पे सब अपनी डील करा के ले सकते हो. इवेंट्स लाइक गेम कनेक्शन, वाइट नाइट्स, XDS, GDC, गेम्सकॉम, पॉकेट गेमर कनेक्ट, बहुत सारे. And then there are a lot of Excel sheets today available online जिसमें 1000 पब्लिशर्स के नाम है. तो ढूंढ नहीं रहा है ठीक से, गूगल कर, तुझे सब कुछ मिल जाएगा. अगर IGDC में मोबाइल गेम पिच करनी है पैनल ऑफ इंडस्ट्री को तो कैसे करें? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. एक चीज़ होती है IGDC में जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर पब्लिशर कनेक्ट. गूगल कर IGDC और उसके आगे लिख इन्वेस्टर पब्लिशर कनेक्ट. उसमें होता ये है कि तुझे अभी पता नहीं अभी ओपन हुआ है कि नहीं, कंटेंट टीम को पता होगा. बट वो एप्लीकेशंस आते हैं जो तुझे अप्लाई करना पड़ता है, एंड देन
You will be shortlisted and you will be taken in front of all the publishers and investors that you can pitch your game to. तो वैसे कर लें. सेकेंड चीज़ आई थिंक वील ऑल्सो डू अटेंडीज की लिस्ट मिल जाएगी तुझे IGDC के पेज पे जब भी वो लाइव होगा वेबसाइट. उससे जितने लोग आ रहे हैं अटेंडीज उनके एक एक नाम लेके उनको मेल कर और उनको बोल कि मैं आ रहा हूँ IGDC. वहाँ पे हो जाएगा. मीटिंग कर सकते हैं क्या. डर लगता है कि गेम चलेगा कि नहीं. तू बना तो सही. अगर गेम नहीं चला तो तेरा करियर तो चल जाएगा. तू सीख तो लेगा बहुत सारी चीज़ें. बना. Krishnanand Yadav, I'm 20. The main reason for getting tired of Unity is that I tried to make mobile games. I found that they are more difficult to build than PC games. Something always breaks in different mobiles. Dude, 20? Are you serious? You're 20 and you're burning out. Come on, man. Half of my age. You're just half of my age. I woke up at 6. I went to gym. I did 2 hours. I went to office. I came back and I'm doing a live stream now. What is happening to you guys? What is it? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज़ें पीसी में नहीं आएंगी. पीसी में इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं. The problem with the current developer ecosystem is that because बहुत सारी चीज़ें readily available है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर का कंट्रोलर डाल दूंगा, एनवायरनमेंट डाल दूंगा, चल रहा है, कैरेक्टर कूद रहा है, हो गया. शूटर का कोई टेम्पलेट उठा के डाल दिया, हो गया, मेरा गेम बन गया. That is why it looks easy on PC. But you have to custom build it for mobiles. Any update related मुक्ति. मुक्ति के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते. इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट बन चुका है अभी. We are actually not even allowed to talk about it because there is contracts. IGDC is so pavitra. I found Mr. Underdog there must pavitra. Moreover, I don't even want to make mobile games. I had always been a fan of PC games. यही है, ये दूसरा प्रॉब्लम है कृष्णानंद यादव. आज तो मैं तुझे सच्चाई बताकर रहूंगा. ये दूसरा प्रॉब्लम है. लोगों को ऐसा लगता है कि लोगों को सीधा BMW चलाना. पहले एक इंडिका लो, एक मारुति 800 चलाओ, ठोको उसको 10 बार, तोड़ फोड़ करो, देखो तुम कहाँ पे रायता फैला रहे हो, कहाँ पे तुम्हारी ड्राइविंग सक कर रही है, कितना टर्न लेना था और कितना लेके तुमने गाड़ी को ठोक दी. ये सब चीज़ें जब सीखोगे एक मारुति 800 पे या एक इंडिका पे या एक क्या बोलूँ अभी एक खटारा गाड़ी पे, तब जाके तुम लो BMW या मर्सिडीज. फैन तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टोफर नोलन आज अगर बैठ के ओपनहाइमर बना रहा है तो क्या उसने पहला मूवी ओपनहाइमर बना दिया? उसने शॉर्ट्स बनाए भाई, पहले उसने शॉर्ट फिल्म्स बनाए पहले. ये लोगों को एग्जाम्पल तुमको इंडिया की देता हूँ.
राजू हिरानी को देखो, अनुराग कश्यप को देखो, फिल्में बना रहे हैं लोग, सिनेमा बना रहे हैं। पहले ही दिन उठ के सिनेमा नहीं बना रहे हैं। किसी के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन की है उन लोगों ने पहले, फिर छोटी फिल्में बनाई है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, 5 मिनट की फिल्म्स बनाई है, 10 मिनट की बनाई है, फिर जाके उन लोगों ने 3 घंटे की मूवी बनाई है। ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। लोगों को लगता है पीसी गेम्स, कंसोल गेम्स, दैट्स व्हाट आई एम बिल्ट फॉर। भाई बहुत चीजें है उसके अंदर जो तुम्हें अभी पता भी नहीं है। Someone asked in Discord, can I use Godot game engine to make a game? Yes, you can definitely use Godot. And Godot is a really good engine. But unfortunately, not a lot of people used it. इसके लिए वो इतना वायरल नहीं हुआ, पर Godot is a really good engine. Yeah. Nitin, hello. Nirox. Sir, is there a way to enter the industry as a game designer? Like I know level design, GDD creation, and basic game psychology. I also know the asset creation pipeline, bit of blueprints in UA. Okay, so you are at a good stage, Nirox, to start an internship. एक काम कर, simple सी चीज. With all this knowledge that you have, if you can create a good portfolio, great. Then take that portfolio and start applying to companies, all the companies, for internships. Internship लेके कंपनी में पहले घुस जा, बस बाकी सब बात की बात है। किसी भी कंपनी में तुझे एज अ फ्रेशर या एज अ फर्स्ट स्टार्टिंग तुझे नहीं लेंगे विथ जस्ट दीज थिंग्स। इंटर्नशिप देख, इंटर्नशिप से कंपनी के अंदर घुस जा और फिर वहां से बड़ी छलांगे मार, हो जाएगा। उदिप्तो डे, अ बॉय फ्रॉम बंगाल, जस्ट मार्क माई नेम, एक दिन इंडिया में मेरा गेम जरूर आग लगा लाएगा। मार्क कर लेता हूं तेरा नाम। कर लिया। विजय, निखिल सर से मिले आप? क्यों, कुछ मिलना था मुझे, कुछ काम था। मॉड भैया, मैं तो गेम डेव गोडो से स्टार्ट किया हूँ, एक्सक्लूडिंग 700 आवर्स ऑफ वॉचिंग ब्रेकीज फॉर नो रीजन। सीखा तो होगा तो कुछ ना कुछ, नो रीजन तो नहीं है। I am into digital art and concept art. I'm looking for an opportunity as an artist in a gaming studio, but the problem is I am not getting any response. Digital art and concept art. I'm looking for an opportunity as an artist in a game studio, digital art and concept art. See, the problem, Partho, in India is there are not many studios, gaming companies in India who require concept art, really. And I'm being very honest. Concept art as a domain, बहुत ही कम स्टूडियोज है जिन्हें ये लगता है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। But there is way too much hype and क्या बोल सकते हैं, requirement outside India. Have you tried looking for opportunities outside India? Because I think you will get a lot of good opportunities if you're a good artist. सबसे पहले वो चीज़ है। I'm assuming you are.
um, but you can get a lot of international gigs which are remote that you can do from your home itself, because concept art के लिए डिमांड तो बहुत है ग्लोबली. कुशल भाई हेलो. कुशल भाई भी इधर भी है. Okay. मैंने देखा है कि कुशल वैद गेमर गेज ने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है. अच्छी बात. गुड. And the final year, I'm in the final year of my college, BSc Game Design, and we are creating a psychological horror. Hope we'll come to IGDC and showcase our game to you. Yeah, there is something very interesting for indies this year at IGDC, जो obviously I'm not allowed to talk about today, but उसके बारे में आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा. There are big, big, big things for indie this year. So keep an eye on that, on IGDC's announcements. And you'll have to apply and all that stuff, but crazy amount of things that we are doing for indies. So you might as well get a table where you can showcase your game if you go through what I'm talking about. आपको पर्सनली कौन से गेम स्टूडियो पसंद या उनके गेम्स? मुझे नॉटी डॉग, हैंड्स डाउन. नॉटी डॉग, टेलटेल गेम्स, सैंटा मोनिका ठीक है, but I love Annapurna. Annapurna is an indie publisher. I like the unique concepts of Annapurna games, and then I like that games company जिसने जर्नी बनाया, फ्लो बनाया, फ्लावर बनाया. How do I become a game publisher? हैं? क्यों पूछते हो यार? If you have if you have like $10 million, probably you can just put it on LinkedIn and say that you're a game publisher. बन जाएगा. You don't have to do anything. It's very easy. Concept artist is a job for high-level studios like Nintendo and Rockstars, because they need to make sure that the upcoming game will look good and producers and designers make it. कि भाई इन्वेस्ट करना होगा. कि भाई इन्वेस्ट करना. Yeah. Yeah. Correct. Wild beast. Development wise, right, जो मेजर डिफरेंस जो होता है ना मोबाइल गेम्स और पीसी गेम्स में भी, एंड वर्सेस if you're dedicated to building something on console, पूरा पाइपलाइन चेंज हो जाता है. लाइक टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, मोबाइल पे आप क्या करते हो? यू मेक अ प्रोटोटाइप and then you keep polishing that prototype. Like you make something, you add details to it, and you just go on polishing it. Or end of that journey, like say 6 months, 1 year down the line, you have like a final game with a final output. Sometimes you also do some concept art to just get a feel of what you need at the end, but यूजुअली ऐसे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है मोबाइल में. इन कॉन्सोल स्पेसिफिकली, अब जब हम प्ले स्टेशन के लिए बना रहे हैं, इन कॉन्सोल
What you need to do is you need to finalize on your pipelines first. What do I mean by this is, let's say if you are going for a stylized artwork for your game. स्टाइलाइज्ड आर्टवर्क जैसे जैसे किसी भी लाइफ इज स्ट्रेंज में थोड़ा स्टाइलाइज्ड आर्टवर्क था. If you are going ahead with a stylized artwork, then you need to create props and an environment which replicates the final outcome of your game. जैसे मान लो मेरे गेम में ये माइक ये फोन यूज हो रहा है मेरे गेम में एक फोन. दैट फोन needs to be like you have to first create props, a few props, and a set of a small environment which can match the final outcome. You need to test that on the consoles, on the dev kits, to see कि उसके सारे पैरामीटर्स राइट हैं, कि वो कितना थिक है, कितना उसका डेंसिटी कितना है, and if it's working on consoles fluently, right? जिससे तुम्हारा FPS भी ड्रॉप नहीं हो रहा है. ये सब चीज़ें एक चेकलिस्ट आप करते हो, and you make sure that your every prop, every asset or that environment is high quality, but at the same time it's optimized. Once you crack that code, then you reverse engineer everything. तो जैसे वो एक एसेट बनाया था, आने वाले सारे एसेट्स जो भी आप बनाओगे, props, all has to follow the same pipeline, the same parameters and the same things. This is how like the complete different phase of game development comes into the picture when you're building it for mobile versus consoles. Everyone please hit the like button. सिर्फ 15 लोगों ने लाइक किया हुआ है. A key bro to become a game publisher, establish a company, secure funding, acquire publishing rights, build a network with developers and platforms, and manage marketing and distribution. बस. Rajiv, how to get an internship or an entry level job in the game design domain? मेरे चैनल पे एक वीडियो है, मेरे पास अभी उसकी लिंक नहीं है, बट उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने ये चीज़ बताई है. बट जस्ट टू स्टार्ट विथ, क्रिएट अ ग्रेट किक-एस portfolio, like one page with a great portfolio, and how to create a portfolio, that is also there in one of the videos, so go and check that out. Kevin Patel, hello sir, I'm planning to make 2 prototype games in the end of the year and come to IGDC for networking. Basically try to generate leads for internship. Is this good approach for networking? Amazing approach. Kevin Patel, this is an amazing approach, and I like the way you think. There is hard work, there is efforts है जो डालने पड़ेंगे, and you're thinking about that. You're trying to do something which has an end goal to it. Good. It's a good way. Thoughts on starting your own gaming company? Like my teachers say, it's better to get at least 10 to 15 years of experience before that. What do you recommend to me, as I am an aspiring game designer? I wouldn't say it requires like 10 to 15 years. I disagree to that. But I definitely agree that you need experience, that you need to first work somewhere, gain experience, see how that company functions, see how a typical company actually functions. You being a game designer, would you be able to make money from whatever you are working on? Would you be able to do that? For that, you need to have a complete team, people with art experience, with programming experience, and all of you together will make a game, and that game will make money. So learning all these domains
and building a great team that can build games for you, that can only be done when you network and meet a lot of like-minded people. So job करने में you get all of these things. You get to meet people with similar mindsets in the same domain, and you also get experience of building things um, for someone else uh, with all the risk that someone else is taking. मैं एक सोलो डेवलपर हूँ और गेम पर काम कर रहा हूँ. एक बार चेक लूँ और सजेशन दैट वुड रिक्वेस्ट. ओके, चेक कर लो और सजेशन दे दो. क्या चेक करूँ? गेम क्रिटिक कैसे बनते हैं? जस्ट था. ओह शिट. एक वेबसाइट चालू कर और हर गेम पे बकचोदी करना चालू कर. हो गया तो गेम क्रिटिक. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. एक वेबसाइट चालू कर और हर गेम पे कुछ ना कुछ बोलते रहे. हो गया क्रिटिक. क्रिटिक बनना क्यों है तुझे? सबसे पहली बात, क्रिटिक को कौन पूछता है? Oh sorry, I have to go. What the fuck game? IGDC game jam में पार्ट लिया है. All the best. If you win, I'll see you in Bangalore on I can't tell you the date, but next month. Hi Vaibhav Chavan. How are you? Currently we have 3 mobile games in pipeline, almost ready to launch and one already launched. What would you suggest to get loads of downloads? Parth, there is a simple strategy that a lot of people don't understand or they shy away from it. Is you need to spend some money on user acquisition. I mean, that's the beginning. Like if you're building a game for say 6 months, you're obviously putting a lot of money into building that game. Might as well set aside some budget for user acquisition, which will give your game a good leverage. मतलब even if it's like 200 rupees per day that you're spending to get some good quality downloads, people that fit into your games category will definitely play your game, and you can then look at the analytics and see how these guys are behaving, what is it that they are not liking, when are they dropping off. ये सारी चीज़ें देख के you can tweak your game better. Slowly you will get organic installs. तो बेसिक फेज ऐसे ही होता है. पहले दिन से तुझे loads of download तो नहीं आएंगे, unless there's one way to do that is if you're building a game, say like a driving game, तो YouTube पे बैठ 2 दिन और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने किसी भी ड्राइविंग गेम के वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पे, उन सारों को मेल लिख के बोल कि मेरा ये गेम आया है, कैन यू कवर दिस गेम, और फ्री में करना है, इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं. 100 मेल जब भी भेजेगा तो उसमें से 2 लोग अग्री करेंगे. 2 लोगों ने भी डाल दिया, 10-10 हज़ार व्यूज़ भी आ गए उस पर, तो भी तुझे इनिशियल अच्छा बूस्ट मिलेगा. सर मुक्ति के बारे में अपडेट्स दे दो. नहीं दूंगा. नहीं, मैं बस सोच रहा था कि ये होता कैसे. वैसे सर क्या मेरा सिलेक्शन इंटर्नशिप में हो सकता है? मैं 10th में है तो पढ़ाई करना मेरे भाई. क्यों करनी है इंटर्नशिप?
Why are you not studying? Study. Study, yeah. Awesome. Thank you so much for your feedback. Thank you. Thank you very much. किसके किसके शहर में, गाइस कैन यू जस्ट ड्रॉप कि कौन किस शहर से बात कर रहा है, जस्ट फॉर माय नॉलेज, ऑल द पीपल दैट आर लाइव राइट नाउ, जो ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं. आप बस स्किल देखो. इंदौर, हैदराबाद. ओह, आई गेस बहुत दिक्कत होती है अगर 10th और 12th का रिजल्ट खराब हो, कॉलेज पहुंचकर ही सोचना. या एनी न्यू अपडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग गेम्स? नहीं, रिसेंटली हम लोगों ने वो लेटर भेज दिया है जो पूरे हर जगह पे आ चुका है ऑनलाइन. अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या करता है. फ्रॉम नासिक, हैदराबाद, इंदौर, नासिक, जबलपुर, नागपुर, आई कैन इजीली स्कोर मार्क्स. ओडिशा, भाई इंडिया में फैली हुई पब्लिक है ये. नाइस. बारिश हो रही है तुम लोगों के यहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत हो रही है. आई कैन सी इट्स रेनिंग. 10th और 12th, यार जकरबर्ग ने ड्रॉप आउट लिया, इसका मतलब ये नहीं है आ, कि हर कोई ड्रॉप आउट बन जाए. जकरबर्ग के पास ऑलरेडी $1 मिलियन आइडिया था जिसके चलते उसने ये किया. 10th, 12th और इवन ग्रेजुएशन फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि मैं ग्रेजुएट है बंदा तो ही मैं हायर करता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि 10, फॉरगेट अबाउट 10th एंड 12th, फॉर मी आपने ग्रेजुएशन करनी इतनी ज़रूरी है बिकॉज ग्रेजुएशन में आप ऐसी सब चीज़ें सीखते हो, अच्छी बुरी सारी, जो आपको लाइफ में बहुत काम आती है. जैसे फॉर मी ग्रेजुएशन वाज माय इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग में एवरीबडी नोज, कोई प्रोफेसर कुछ सिखाते नहीं है, एंड देन यू योरसेल्फ हैव टू डू थिंग्स, राइट? सो engineering taught me a lot of things. Engineering taught me टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई हम लास्ट के 5 दिन में करते थे. दैट इज टाइम मैनेजमेंट. इंजीनियरिंग taught me how to speak in front of people. मेरा फियर ऑफ टॉकिंग ऑन स्टेज, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशंस बहुत देता था इंजीनियरिंग में, वो डर मेरे अंदर से निकाल दिया इंजीनियरिंग में. सब कुछ खुद से करना, सेल्फ लाइक इंडिपेंडेंट होना इंजीनियरिंग ने सिखाया. इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से कैसे बात करते हैं, हर चीज़ इंजीनियरिंग ने सिखाई मुझे. ये सारी चीज़ें आपको बहुत पीछे रह जाओगे वरना लाइफ में. व्हेन यू आर आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड, तब आपको ये सब चीज़ें मालूम नहीं होंगी जो बाकी लोगों को मालूम होगी. दैट इज़ वेयर यू लैग बिहाइंड. तो अगर तुम 10th, 12th या इवन ग्रेजुएशन, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें प्रोवाइड कर सकती है, लाइक योर फैमिली इज केपेबल of providing you all the facilities to do graduation,
यू शुड डेफिनेटली डू दैट बिकॉज पहले बात तो बहुत लोगों के नसीब में नहीं है ये चीज़, तुम्हें मिल रही है तो ले लो। आई एम नियर टू मुंबई, माई ड्रीम इज टू विजिट मुंबई। यू शुड विजिट मुंबई। मुंबई में टमाटर क्या रुपए किलो है? ये चीज़ें मुझे नहीं पता। मैं बड़ी चीज़ें देखता हूँ, छोटी चीज़ें मेरी वाइफ देखती है। ये चीज़ मैं बड़ी चीज़ें जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहिए, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें मैं देखता हूँ घर में। ओह वहाँ पे बारिश नहीं है? ओके। अरे भैया मर गए, गर्मी में नहीं हो रही। हम्म, बिल्कुल नहीं, भेजो थोड़ी बारिश। अरे क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ तो रेनी है भाई। सर एक रिक्वेस्ट, बस थोड़ा सजेशन दे दो गेम प्रीव्यू देखकर। किधर है तेरा गेम प्रीव्यू? आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेजुएशन, एजुकेशन इज अ वेपन टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। शायरी कर दी इसने। हाँ भाई, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, तब जाके स्टार्ट करा। तू भी कॉलेज पहुँच के ही सोच रहा। आई गेम स्टूडियोज क्या रिव्यू करना है यार, मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे। वहां कुछ अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि वहां कुछ प्रकार की रोशनी। अविश्वसनीय, मैंने हिमालय में एक प्राचीन गुफा में कुछ पाया है। वाह, ये एक प्राचीन दरवाजा है। भगवान कृपया मुझे रास्ता दे दीजिए, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। ये एकदम लोकलाइज्ड गेम है। फाड़ी राज का मतलब क्या है? मतलब मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। प्रोटोटाइप अच्छा है, ऑकल्ट चेम्बर्स की तरह लगा मुझे, सिमिलर, वेरी ऑनेस्टली। कोशिश अच्छी है, बट फाड़ी राज का मतलब क्या है? मेरे यहाँ भी नहीं है। मैं 10th में 94 और 12th में 70 पाए, जो कि काफ़ी कम है। इसका एक ही रीज़न था कि मैं गेम डेव्स और स्टोरी राइटिंग में घुस गया था। लो लाइव एग्जाम्पल, मी ॲज अ 3D मॉडेलर एका ई कॉमर्स एसास कंपनीसाठी काम करत आहे। मी ॲज अ ट्रेडर, ओके। 2 years ॲज अ 3D मॉडेलर एक्सपिरियन्स आहे। गेम इंडस्ट्री मध्ये येण्याची खूप इच्छा आहे। प्लीज गाईड हाऊ शुड आय? If you have enough experience in 3D modeling, then you can just apply as a 3D modeler. Um, Make a good. I'm sure you have a portfolio as well. So uh, take that portfolio. You can apply. There's no trick to this. You have experience, so you can easily get a job as a 3D modeler. Okay, sorry. Hi, sir. Atif Khan, do you conduct one-on-one consultation for game programmers and then portfolio review? I do, but it's paid. Um, it's 999 per hour. Atif Khan, Chat GPT का वॉइस ऑप्शन कितना कूल है? जस्ट एक्सीडेंटली यूज। कूल तो है, इमेज भी उतना ही कूल है। सर्च द माउंटेन ट्रूथ्स। फाड़ी पहाड़ी, अरे तो फाड़ी क्यों लिखा है भाई? पहाड़ी राज। वैसे 3.5 days किया और उसके ऊपर और भी काम कर रहा हूँ।
अच्छा है। वैसे मैं अप्लाई कर हूँ मेरा पोर्टफोलियो। हास भाई तेरी लैंग्वेज है ना मेरे ऊपर से जा रही है। गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो एक बार। 1 hour 22 minutes in the game. लाइव स्ट्रीम इज ऑन। बट अभी मैं और 8 मिनट में स्ट्रीम का ख़त्म करूँगा बिकॉज अभी मुझे आराम करना है। यस बट इट वॉज अ गुड सेशन। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? यस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, गो अहेड। मैंने कब रोका भाई तुझे? मैं कब से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ? ऐसा ऐसा तुझे किसने रोका? कुठेतरी वाटतं की गेम इंडस्ट्रीसाठी फक्त गेम रिलेटेड पोर्टफोलिओ लागेल. इट्स नॉट दॅट ट्रू. पोर्टफोलिओ yeah, I mean you need a few things जसे like that can overlap with the gaming industry as well, but not everything. I mean you can show your portfolio that you've already created. अब नेक्स्ट गेम स्ट्रीम कब करोगे भाई? मैं करूँगा कल. कल करूँगा. Thanks sir, I would love your mentorship. Okay, then you should drop me a DM on Instagram. नए गेम डेवलपर एक गेम पूरी तरह से बनाते नहीं लेकिन सपनों में सदा टॉप पर रहते हैं. I can see where you're getting up to, but ठीक ही है. सपने देखना जरूरी है. सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे करोगे? पूरे करोगे क्या? सपने ही नहीं देखोगे तो पूरे करोगे क्या? Sir mailed 9 publishers regarding Fadiras but 5 rejected. क्यों किया है लेकिन तूने? अभी तो तूने कहा कि तूने 3 दिन में बनाया हुआ है ये. तो पब्लिशर को क्यों भेज रहा है तू ये? पब्लिशर को अभी नहीं भेजना होता भाई. पब्लिशर क्या तेरे यार ये डेमो को इतने 3 दिन में बनाए हुए चीज को देख के तेरे को डील देने वाला. I have recommendation for game stream. Graveyard Shift, Kamla, Cricket 24, Shinkansen, Japanese game. Graveyard Shift है मेरे पास. Let's play Graveyard Shift tomorrow. Let's do it. Let's fucking do it, bro. Because based on Indian and they are not accepting the horror thing. That's not the only reason. ये डेमो जो तूने वीडियो भेजा है, it's good to show your skills. It is not at all good for you to get selected by a publisher. It's nothing. Publisher को pitching करते वक्त you need a great pitch deck. You need a great quality, high quality gameplay जो कम से कम 10 से 15 मिनट का हो. यू नीड अ बजट शीट कि गेम का बजट क्या है. यू नीड अ प्रोजेक्शन शीट जिसमें आप ये बताते हो कि ये गेम लॉन्च होने के बाद कितना पैसा कमा सकता है तुम्हारे हिसाब से. और ऐसे कई सारी चीज़ें जो लगती है. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन मैक्स पेन गेम सीरीज? आई लव इट. मैक्स पेन मेरे बचपन की एक याद है. दैट वाज अ फर्स्ट
ऐसा गेम था जिसमें इतनी ग्रेट स्टोरी लाइन थी, डर भी लगता था मुझे। मैक्स पेन 1 में आई थिंक आई वाज 20 ईयर ओल्ड शायद से 21 ईयर। ऑलरेडी वर्क बिफोर ऑन इट। अच्छा 60% डन। ओह, someone suggested me don't go to a big company for internship because they didn't give good training. They're scared to share the work with intern who has copy paste करवा, वो बस copy paste करवा। That's also true. I'll make thumbnail for that if you want buy. Nay, I don't. But I reworked on it again from first person to third person and other parts. Okay. Alright, 2 minutes to go, ladies and gentlemen. Sirf gentlemen. Remedy was getting banger. आपल्या अंडरडॉग मधल्या आर्टिस्ट बद्दल काय कमेंट कराल तुम्ही? लाईक हाऊ लॉंग अ फ्रेशर नीड्स टाइम टू गेट फॅमिलिअराइज अबाउट एन्व्हायरमेंट, लाईक वर्क एन्व्हायरमेंट अंडरडॉग्स मध्ये? वी आर वेरी चिल. वी आर आई मीन, मेरे से पूछने से बेटर तो मेरे लोगों से पूछो. वी हैव अ ग्रेट वर्क कल्चर. देयर इज नो हायरार्की. वी आर ऑल इक्वल्स. हम साथ में बैठते हैं. ओपन कल्चर है. हमारे केबिन्स नहीं है. साथ में बैठ के खाते हैं, चिल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, गेम्स बनाते हैं. तो एक फ्रेशर को मुझे लगता है एक दिन भी काफ़ी है. भाई बुरा मत मानना, दिस गेम डजंट हैव एनी रियल गेम प्ले एट ऑल. Honest opinion. Any suggestion regarding internship in international studies? You need to work a lot for that. मैंने अभी ये स्ट्रीम को मैं रखूँगा तो थोड़ा पीछे जाके जस्ट सी देयर इज वन क्वेश्चन जो आया था. आई थिंक राहुल जेठवानी ने पूछा था. उसी पे उसका आंसर देख ले जाके. इंटरनेशनल स्टूडियोज इंटर्नशिप के बारे में. ऑल राइट गाइज, इट वॉज अ ग्रेट सेशन. मज़ा आया मुझे. शायद कल करेंगे ग्रेवयार्ड शिफ्ट. वक्त मिला तो डेफिनेटली करेंगे. वाई प्रोग्रामर सैलरी इन गेम डेव इज लोअर देन वेब डेव इन इंडिया? कुछ भी. प्रोग्रामर सैलरी तो सुनेगा ना, इंडिया में हिल जाएगा. तो I game by you can start by learning game design from base. Okay, so yours look more like a tech demo. WTF community अच्छे live streams कर रहा है. Nice. Thanks sir. Informative. Alright guys, good night. Thank you for watching the stream. एक बार जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो तो मज़ा आ जाएगा. पुण्याचा आहे मी. आय थिंक मे बी मी ॲज अ फ्रेशर्स कन्सिडर करेल. आपल्या अंडरडॉगमध्ये कधी काय काम करण्याचे लाभ मिळेल तर. वी युजली डू ओपन अप ओपनिंग्स. तो कीप एन आय ऑन द लिंक्डइन पेजेस. तिथे कळेल तुला. एट विच एज यू रियलाइज आप एक आर्टिस्ट हो? मुझे पूछ रहा है. मैं आर्टिस्ट हुई नहीं, मैं गेम डिज़ाइनर. मैं थिएटर करता हूँ. इवन आई नो वेब डेवलपमेंट. ऑलराइट गाइस, गुड नाइट. गुड नाइट. बाय बाय. बाय बाय.